इशू था कि 2.5% टैक्स लग जाएगा इंपोर्ट पे। 2.5% टैक्स अगर टेक को लग जाता है तो कौन सा, अगर उसकी वजह से टेक कंपनीज नहीं चल सकती ना, तो फिर देन देयर इज अ मच लार्जर प्रॉब्लम देन जस्ट दिस कि जो मंगाएगा उसको तो जी। और ओपनली ये डिस्कशन हो रही है फोरम पे कि अगर इस तरह हुआ, अगर फिर तो वो लोग प्रॉपर चैनल से नहीं मंगवाएंगे। वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस वी डिड द आईपीओ ऑफ एवेंसियन, बट वी हैड सेट अप a plan of Highway 50. This year we announced the plan of Highway 100, which is that just Evancian would do $100 million in revenue within the next 4 years. 2022 का जो target है, inshallah we will meet that, which is the first step towards Highway 100. So Evancian is something that we've been doing for the last 30 years. I'm not saying that it is very easy, but it is much easier for us because we know the market, we are dominant in Pakistan, and we try out whatever we try out in Pakistan, then we take it international. ऑक्टोपस का है कि ऑब्वियसली जब वो लिस्ट हुई थी तो ऑब्वियसली एक्सूबरेंस बहुत थी ना, 27 टाइम्स गुना ये ओवर सब्सक्राइब हो गए, वाज अनहर्ड ऑफ। तो ऑक्टोपस वाज ऑलवेज अ लीप ऑफ फेथ, इसके उनका काम आगे आना था, ठीक है। तो दे आर सब्सिडियरी ऑफ एवेंसियन, तो एक तरह से एक रेडीमेड पाइपलाइन होगी इनकी ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट वो अब उस पे कैसे डिलीवर करते हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं ये देखिए। अगर कोई मुझे वैसे कह दे कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हैं, तो अब मैं उसका आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट। ओके, मैं आपको बताता हूं जी प्लीज कि कितनी कंपनीज हैं। आई कैन टेक इवन नेम्स, द लाइक्स ऑफ एंग्रो, द लाइक्स ऑफ फातिमा एंड ऑल दैट डू हैव very big large systems which go on top of the control systems, and those are servers which are placed in the industry, what we call on-prem, and does these kind of reporting, analysis and all that. So taking it to the cloud and eliminating all proprietary hardware and software essentially opens up the market, because you don't need high capital expenditure with our solution. And it is a total hosted application on Microsoft Azure. So we can bring people to speed in 15 days and start giving them actionable information. जिन्होंने टेक कंपनी ने, नई कंपनी ने पहले साल पैसा रेज किया हो और कैश बर्न ना किया हो, बिल्कुल, तो कोई ऐसा, तो हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना। is the most important thing. अगर वो डिलीवर करना शुरू हो गए एज पर ट्रैक, तो फिर ऑब्वियसली वो एक वापस इस स्टॉक में आप एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट रिवाइव होते हुए देख सकते हैं सर्टनली। बट इट वाज फिनोमिनल जो इसका आईपीओ हुआ था, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें वापस था इससे, बट दे नीड टू स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन दैट ट्रैक रिकॉर्ड। तो आई होप कि अब वो उनका ऑलवेज 1-2 साल के बाद ही आना था, तो अब वो एक क्रिटिकल टाइम एक आ रहा है कि जी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स लेट्स सी हाउ दे डिलीवर इट। दैट वाज द बिजनेस प्लान दैट वी हैड व्हेन वी did the IPO, and it's the same business plan. We add more and more skills and demonstrate in Pakistan and then take it internationally. When we do work in Evancian, we do projects which optimizes, we do a lot of hardware, we use international, several technologies to make sure that a solution is provided, whereas all the production is done in an automatic manner and it is repeatable. What Octopus does so we've developed a software a tool which talks to all these devices and takes the data to the cloud. इस किस्म की बात करते हैं टेक के गवर्नमेंट को जाके कि असल में तो एक्सपोर्ट 2 बिलियन है, नजर 1 बिलियन आती है। दिस इज एम्बैरेसिंग। This is embarrassing. If educated tech business people make that plea, अगर नहीं आते तो they should force के वो ठीक तरीके से आए। नाज़रीन, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 महीनों से what we have been discussing is the technology and the rally which has just been led by the technology. When we look at the political front, हमें काफ़ी सारी developments नज़र आ रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन है और 1-2 जो political development हुई हैं उसके नतीजे में थोड़ा सा political shaky सा माहौल है, जिसकी वजह से what we saw in last 2 sessions was कि investors sideline रहे, बल्कि अगर ये कहा जाए
कि काफ़ी सेलिंग देखी गई just because people thought कि आगे situations जो हैं वो बहुत ज़्यादा challenging होंगी. But nonetheless, when we look at the end of this week, what we are seeing is कि चीज़ें improve हो रही हैं, stability आ रही है, और जिन front से clarifications expected थी वहाँ से clarities भी आ रही हैं. i.e. November is not going to be as tough as anticipated by a few quarters. और लगता ये है कि डार इकनॉमिक्स इज़ वर्किंग बिकॉज जो करेंसी नोट्स की बात हो रही है कि कुछ नए करेंसी नोट शायद इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. जो पुराने करेंसी नोट्स हैं वो दिसंबर तक चल सकते हैं. एंड वी ऑल नो दीज आर दी फाइनेंशियल मेजर्स विच हेल्प एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी. और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है सिवाय क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट के, सिवाय जो डेट की पेमेंट है उसको रीस्केड्यूल कराने के, और सिवाय इस चीज़ के कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है, जो कि IMF कहता है कि आज के दिन IMF के चीफ ने कहा कि आपको शरह सूद को बढ़ाना होगा, वो नज़र आ रहा है कि डार इज़ एबल टू मैनेज द इंटरनल फाइनेंस. एंड इन द फेज़ 2 इट अपीयर्स कि डाउन द रोड 3 to 4 months वो वक्त आ जाएगा कि जब पाकिस्तानी बॉन्ड्स की आप बात को अचंबा ना समझें, बल्कि पाकिस्तानी बॉन्ड्स के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग टर्म डेट को जो है वो रेस कर ले. आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अगेन, लास्ट प्रोग्राम में हमने एक टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू लिया था और हमारे जो नाजरीन थे उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स भेजे थे एंड दे वांटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवेंसियन एंड दी ऑक्टोपस. बिकॉज हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो बाकी टेक सेक्टर की कंपनीज हैं उनको डिस्कस कर लिया था. आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नन एल्स देन बख्तियार. ही हैपन्स टू बी द CEO of Evincian and the chairman of Octopus. Bakhtiar sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me there. Welcome sir. Directly over to you. Tell us what are the prospects, what are the challenges, what are you up to down the road 1.5 year, 2 year? Challenges to business में ना हो तो कोई you don't enjoy it at all. Right. And especially in tech, if you are not, मैं तो हमेशा कहता हूँ, if you're not up at night thinking that somebody else will be ahead, if you are not sleepless because of that, you would go away and you could have a great run for 5 years, but you will die down because you have to be creative, you have to bring in new things to the table, new value propositions. So it's, what I'm saying is it has nothing to do specifically to the economy. This is unique to every tech company. Having said that, देखिए हमने तो we've come a long way since we did the IPO of Evancian, where we had set up a plan of Highway 50. This year we announced the plan of Highway 100, which is that just Evancian would do $100 million in revenue within the next 4 years. And every investment and everything that we're doing right now is completely aligned with that. So 2022 ka jo target hai, inshallah we will meet that, which is the first step towards Highway 100. So Evancian is something that we've been doing for the last 30 years. I'm not saying that it is very easy, but it is much easier for us because we know the market, we are dominant in Pakistan, and we try out whatever we try out in Pakistan, then we take it international. That was the business plan that we had when we did the IPO, and it's the same business plan. We add more and more skills and demonstrate it in Pakistan and then take it internationally. So a testament of that is that now 70% of our revenue is international, is Evancian. So the excitement as far as Evancian is concerned is that we inshallah work towards meeting our Highway 100 target. जो कि बहुत exciting है, challenging है, but the team is totally geared up for that. Besides that, ये जो हमारा I use the word, the new love affair, Octopus, and our new baby Octopus, that I don't know how many people know about the technicality of it, but this we believe is in certain ways, I mean, I will be guarded in using the word, but it is revolutionary. It is what we somehow more and more
deeply we get into it, we believe that we are onto something which is not being done right now, and we are solving a specific problem of the industry. Now you'll say what that problem is. When we do work in Evancian, we do projects which optimizes, we do a lot of hardware, we use international, several technologies to make sure that a solution is provided, whereas all the production is done in an automatic manner and it is repeatable. What Octopus does so we've developed a software a tool which talks to all these devices and takes the data to the cloud. So now you'd say, what is unique about it? It is already done. And yes, a lot of big industries, I can take even names, the likes of Angro, the likes of Fatima and all that, do have very big, large systems which go on top of the control systems. And those are servers which are placed in the industry, what we call on-prem, and does these kind of reporting, analysis, and all that. So taking it to the cloud and eliminating all proprietary hardware and software essentially opens up the market, because you don't need high capital expenditure with our solution. And it is a total hosted application on Microsoft Azure. So we can bring people to speed in 15 days and start giving them actionable information. What is actionable information? It is information like, when did your plant stop? What is the efficiency of your different assets and things like that. So what we've done is something which was considered a real big holy thing, we brought it down using the latest technology. And most of the large companies or companies who dominate this market have their proprietary stuff. Our whole theme is to eliminate that proprietary stuff and take it to every industry, because it is affordable, it is scalable, it is the speed of implementation is very high, and you don't need really high-tech people managing the solution. So this is what we think. We have come out with something unique in the last 3 years. Now the challenge is to deploy it in Pakistan, get some great customer accolades, which we are already in the process. I can't take the name of the customers, and but some of our dearest customers are working with this technology, and they are. So once we do that, then the real business plan is going international. We already have capital that we had raised. We have not burnt it. It is very interesting that we raised our capital, but we have not burned any of the cash, because we are doing some good work also where we are making money in Octopus. So, and the second question would be, and it's what has Octopus got to do with the new company that we've acquired, which was a Dowser company? That's a natural question. I'm just talking about it because you would have asked it. Yeah. If you have anything to say on the previous ones, then I'll go to the next one. Yeah, please continue. So while we work towards becoming a specialized in data, and data also, what in our terminology, data is, we segregate the data, which is IT. IT is a lot of good companies are doing that, which is when they do transactional software, commercial software. We are not in that business. We took control, and we thought our value proposition is the OT data, which is the operational technology, meaning on a real-time basis, taking data for devices in the production, in the industry, in plants. So we solved a problem in which we can take that data at a very challenging interval, which is like every 2 seconds we log. So thousands of data points come in and go to the cloud, and we can do analysis. The natural progression on top of it is that managing data in a way, I would use in a scientific way, where you use machine learning algorithms,
where you use thermodynamic calculations, where you use physics-based models, scientific models, to predict how a machine would behave. Okay. So this is the way world will move forward. So this company Empiric AI, which has done some very good killer work, but they were restricted because of their access to the market, which we already have through Avancian. We have top quality. And two, they were also riding the concept of using an existing proprietary software. They had built their solution on top of it, which made their go-to market tougher, because then clients have to do a lot of capital expenditure and buy. So the idea was that to tailor their solutions to the open data and open cloud model that, and then start taking the customer beyond just data and giving prescriptive and predictive analysis of these assets. So it is a fantastic fit. Both companies have some tremendous talent, and the whole business plan has now been modified that we just not do data, but in a year or year and a half, when we port all those applications onto our platform, we take the customer up the food chain to predictive and prescriptive, consultancy of their assets. Okay, so great. This is the whole. Understood. Bakhtiar साहब, it's time for a short break. वक्फे के बाद हमारे पास एक आध क्वेरी है. People want to understand कि क्लाउड हॉस्टेड बिजनेस पर जो डेटा होता है उसके ऊपर पाकिस्तान में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, डेटा कैन नॉट गो आउटसाइड. तो जो आपके पाकिस्तान में कस्टमर है, पाकिस्तान में बिजनेस का पोटेंशियल है, वो कितना एट रिस्क है या उसके कितने मटेरियलाइज होने के चांसेस हैं बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी डेटा एंड दी गवर्नमेंट्स पॉलिसी के पाकिस्तान से बाहर डेटा नहीं स्टोर हो सकता. आपसे डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बख्तियार साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि एआई साइड पर किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं जो कि अचीव की हैं ऑक्टोपस ने, एवेंसियन ने एज अ लीड कंपनी, एंड व्हाट दे आर अप टू. और जो फ्यूचर है, व्हेन वी लुक एट द बिग टेक कंपनीज अराउंड द ग्लोब, हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ AI. And in Pakistan, I can certainly say there is only one company, that is Octopus, which is focusing on this. बख्तियार साहब, over to you. लेकिन पहले ज़रा ये समझा दें हमारे नाज़रीन को, ये जो एक चीज़ लोग रेस करते हैं कि पाकिस्तान में जो है क्लाउड की जो कंप्यूटिंग है, दैट इज़ अ बिट फार अवे, उसमें कुछ लीगल हिचेस हैं. आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं, बट आई वुड वांट यू डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के आपका क्या व्यू है प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर लॉ की, एंड हाउ डू यू कोप विद दैट? देखिए, हम गवर्नमेंट की हार्डली हमारा बिजनेस कोई गवर्नमेंट कंपनी से है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लिया है ये मोस्टली फाइनेंशियल डेटा पे है. कि आपको स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन, मुझे ये नॉलेज बेसिकली इसीलिए है कि आई नो अदर सिस्टर कंपनी वर्क्स इन दैट स्पेस. तो वो ये जरूर है कि डेटा आई थिंक रिजाइड करना है वो बाहर नहीं हो सकता, बट दैट्स मोस्टली फाइनेंशियल डेटा. लेकिन जो प्रोडक्शन का डेटा होता है, ये तो वैसे ही सारी इंडस्ट्रीज यूजुअली मुख्तलिफ लोगों से दुनिया में उससे गाइडेंस ले रही होती है. वो ना भी हो तो वो डेटा भेजती हैं, डेटा चेक होता है. अगर क्लाउड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो अपलोड करती है. देखें, एक मशीन ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट है, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, एंड दे लॉग इनटू दैट मशीन एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है. हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा इनेबल कर रहे हैं. सो अगर एक डेटा क्लाउड पे होगा, वही डेटा जिसने मशीन चलानी है वो देख रहा होगा, दूसरा भी देख रहा होगा, तो कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाती है. somebody remotely can do calculations, do analysis and say भाई आप, तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ जो प्रोसेस पहले ही चलता था, जो मैनुअल था, जो कम्बरसम था, जो कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता था, उसके सारे पीसेस को कलेक्ट करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है
उसके साथ हमने उसको जोड़ दिया। तो वो जो प्रोडक्शन का है, ये तो इंडिविजुअली, अगर कोई मल्टीनेशनल का प्लांट है वो अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट हुआ होता है कई दफा, लेकिन हम उसको बहुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू which has highest security level, and that's why we use Microsoft's cloud. तो आधे तो हमारे बल्कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की ईमेल्स और डेटा ही माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे होता है, अदरवाइज भी डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे होते हैं। तो हम तो हमारा जो सोल्यूशन है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन के थ्रू ही उनको उस डेटा की एक्सेस दे देता है। तो हम वो जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है उसी के ऊपर हम राइट करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। तो ये एक काफी टेक्निकल इशू है जिसके अंदर हमने सारी सर्टिफिकेशन दी हुई है, लेकिन ये जो लॉ है पाकिस्तान का वो हमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। दूसरा ये है कि बाकी जो हमने इसीलिए ये अपना क्लाउड नहीं बनाया जो कि प्रॉब्ली हाफ द कॉस्ट पे हो सकता था, बिकॉज इन मिडिल ईस्ट एंड सेवरल कंट्रीज अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हमारा सोल्यूशन अलाउ करता है कि आप हमारा प्रोडक्ट तो जहां मर्जी चलाएंगे, लेकिन डेटा इन अ स्पेसिफिक डेटा सेंटर आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो दुबई का सेंटर है, दुबई के कस्टमर्स अपना डेटा दुबई में ऑटोमेटिकली स्टोर करेंगे, इट विल नॉट बी आउटसाइड कंट्री। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स टू इंश्योर दैट वी मीट द मार्केट स्टैंडर्ड्स। ओके, ग्रेट। बख्तियार साहब, ये फरमाएं कि देयर आर सर्टेन क्वेरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान एंड द प्रोजेक्ट्स जो कि ऑक्टोपस ने कहे थे, और उसके बारे में एक काइंड ऑफ परसेप्शन है कि ऑक्टोपस इज़ अ बिट स्लो ऑन दैट। सो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग के व्हाट आर दोज प्लान्स एंड व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स एज ऑफ नाउ? मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखिए, अगर कोई मुझे वैसे कह दे कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हैं, तो अब मैं उसका आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट। ओके, मैं आपको बता देता हूँ जी प्लीज, कि कितनी कंपनीज हैं। देखें, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने टेक कंपनी ने, नई कंपनी ने पहले साल पैसा रेज किया हो और कैश बर्न ना किया हो। बिल्कुल। तो कोई ऐसा, तो हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना कि हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर से वो रेवेन्यू लेना शुरू किया है कि हम कैश बर्न नहीं कर रहे ऑक्टोपस के अंदर। राइट। ये तो अननोन बात है ना कि कोई, नंबर वन। नंबर टू, यस, देखें, कुछ चीजें आपकी डिले इसलिए होती हैं कि इट इज अ वेरी न्यू थिंग, एंड मैं कोई इतना ऐसी स्टोरी नहीं पेंट करना चाहता कि जी बस देखें, वी आर डूइंग समथिंग यूनिक. We are solving a problem. We think the potential is so big that we can't even imagine. हमारे शायद बिजनेस प्लान में उतनी डेप्थ नहीं है टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा है। तो एज यू गो अलॉन्ग ऐसी चीज को करने पे चलते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, नई चीजें आती हैं, आप अपना रडर थोड़ा चेंज करते हैं। द गुड वन एग्जांपल वुड बी ये एम्पिरिक एआई। देखिए, हमारे बिजनेस प्लान में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमने डेवलप करनी थी और इन्वेस्ट करना था, जो कि एक्सपर्टीज। जब भी हमने इस पे काम करना शुरू किया कि दे कुड बी एन एक्विजिशन और अ मर्जर, और तो हमने कुछ चीजें अपनी छोड़ दी कि क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनती थी उस पर इन्वेस्ट करना व्हेन वी गोइंग ऑन टू दैट पाथ। वो थोड़ा सा था, लेकिन उसका जो फॉलोआउट ये है कि वी विल बी एबल टू डू दैट मच क्विकर नाउ बिकॉज वी हैव एक्वायर्ड दैट एक्सपर्टीज। तो इसलिए ये आई डोंट नो किस वजह से वो कह रहे हैं। हम तो समझते हैं कि जो हमने किया है अभी पाकिस्तान में काम और इंस्टॉल किया है, मेरा चैलेंज दुनिया में ये होता है लोगों को कन्विंस करना कि हमने क्या वाकई को किया है। जितना भी किया है ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। वो कहते हैं, क्योंकि देखिए बातें करने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। इफ यू पुट मी इन फ्रंट, सो व्हेन आई से दैट, से आई हैव डन दिस वर्क in this customer and I can show you that I have done this kind of, so the first response is, are you sure? So hum to that makes us proud also, okay, our team, our group of talented individuals have produced something. तो ये हम रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं। अगर किसी को ये कंसर्न है तो दे शुड एक्चुअली आस्क अस कि हम उनको ये
डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमने किया क्या है, अभी तक हमने टेक्निकली अचीव क्या किया है, एंड दे शुड बेंचमार्क इट विद सिमिलर कंपनी लाइक आवर्स एंड से कि यार ये कोई और ऐसा कर भी सकता है कि नहीं. सो दैट वुड बी अ मोर रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स एनालाइजिंग अस. Understood. Bakhtiar sahab, government's whole focus as of now is on the forex, IT-led forex, and the government wants के जो पाकिस्तान में IT-led imports हैं, exports हैं, उसका जो revenue है वो $5 billion के number को cross कर जाए. When you look at the numbers, हमारे यहाँ चूँकि proper documentation नहीं है, तो 50% of the freelancers revenue lends into the home-based classification. That's an issue that SBP is handling as of now. But would you want to give any suggestion to the government, because government keeps saying कि plant and machinery import करने के लिए government के पास dollars नहीं है जो कि businessman को दे. जब plant and machinery पाकिस्तान में लग जाता है तो energy की situation इतनी ख़राब है कि इस सर्दियों में गैस नहीं होगी, और बिजली जो है वो हमें पता है कि 19 रुपये पर यूनिट देने में भी गवर्नमेंट को मसाइल का सामना है जो करंट एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन है. सो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली सेक्टर वेयर गवर्नमेंट इज़ डेंसली रिलाइंग. वुड यू वांट टू गिव एनी सजेशन टू द गवर्नमेंट और द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द टेक सेक्टर इन पाकिस्तान? देखिए, मैं आई genuinely stay away from commenting on government policies and all that. देखें, इतना काम वैसे ही, लेकिन अब आपने पूछा तो देखिए, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट बड़ी सिंपल सी चीज है. क्या ये एनर्जी का इशू आज का है? नहीं है ना. देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कंपनी में एक प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम, और 2 साल चलती रहे, 3 साल चलती रहे, 4 साल चलती रहे, तो आइदर आई हैव टू फायर समबडी और क्लोज डाउन द कंपनी. ठीक है ना. तो देखिए, ये जो आपने सारी बातें की, हु डजंट नो कि फॉरेक्स का इशू है, ये आज का नहीं. ठीक है. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है. एनर्जी, क्या हमने कोई एनर्जी कंजर्वेशन की बात की? हम ये 2 साल तो अब इमीडिएट क्रंच है ना. और एनी टेक्नोलॉजी दैट वी डू रिड्यूसेस एनर्जी. सो जब भी हम ऑटोमेट, कोई जरा बराबर भी सेंसिटिविटी नहीं है कि इफ वी रिड्यूस 20% एनर्जी सेविंग, दैट्स अ एनर्जी यूजेज, दैट्स अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, इजंट इट? आप 20% एनर्जी यूजेज, आपका ख्याल है कि 20% एनर्जी हम वेस्ट नहीं करते किसी के घर में? तो देखिए, ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है. वो तो उनका काम है, मैं कुछ कर नहीं सकता. मुझे कोई कहे गवर्नमेंट ये कहे, एंड इट वुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर मोस्ट बिजनेसेस, कि अगर आपने 20% एनर्जी कम यूज ना की तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी 10 लाख रुपए पर मंथ. सपोज वो मुझे कह देते, डू यू थिंक आई शुड नॉट डू इट? आई शुड डू इट. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, as I should reduce my air conditioning, I should reduce my electricity, I should reduce my fuel usage in the cars, and if they, so ये तो एक बड़ी अच्छी किस्म की रिस्ट्रिक्शन होगी, और मैं कहूंगा कि आई विल एम्ब्रेस इट. कि देखिए, इन दी एंड तो मुझे ही फायदा होगा ना, क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रही. तो सो इस किस्म के कोई स्टेप्स हो लें, कोई क्रिएटिव स्टेप्स लें, तो ये मसले हल हो सकते हैं. ये अब मैंने तो सिर्फ एक आइडिया, आपने पूछा, एक आइडिया दे दिया, उसके अलावा हजारों ऐसे आइडियाज हो सकते हैं. पुट रिस्ट्रिक्शन टू ऑल रिटेल एवरीबडी. आपका लास्ट बिल है ना, आप सोच लें 20% ऑयल इंपोर्ट कम हो जाए तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, आपने कहा, देखें, आई बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग इन दिस बिजनेस ओवर 30 years, ये हमारे फोरम्स भी इस किस्म की बात करते हैं टेक के, गवर्नमेंट को जाके, कि ये असल में तो एक्सपोर्ट 2 बिलियन है, नजर 1 बिलियन आती है. दिस इज एम्बैरेसिंग. दिस इज एम्बैरेसिंग. इफ एजुकेटेड टेक बिजनेस पीपल मेक दैट प्ली, अगर नहीं आते तो दे शुड फोर्स के वो ठीक तरीके से आए. ये कोई लॉजिक ही नहीं, ये कोई किसी किस्म की, अब जिस तरह ये अभी आई मे डिसएग्री या व्हाटएवर, वो कोई सारा इशू था कि 2.5% टैक्स लग जाएगा इंपोर्ट पे. 2.5% टैक्स अगर टेक को लग जाता है तो कौन सा, अगर उसकी वजह से टेक कंपनीज नहीं चल सकती ना, तो फिर देन देयर इज अ मच लार्जर प्रॉब्लम देन जस्ट दिस, कि जो मंगाएगा उसको तो जी, और ओपनली
ये डिस्कशन हो रही है फोरम पे कि अगर इस तरह हुआ, अगर फिर तो वो लोग प्रॉपर चैनल से नहीं मंगवाएंगे। भाई क्यों नहीं मंगवाएंगे? व्हाट इज दैट? सो देखें, ये चीज भी हर 10 साल के बाद यही चीज डिस्कस होती है, हर 4-5 साल के बाद होती है कि आईटी को क्या सपोर्ट मिलनी है। देखिए, government can just do that much. I think they should just focus on human resource. They can't give subsidies and subsidies and subsidies, financial subsidies to make. What can they do? Every business needs top quality of human resource. They should invest in universities. They should say कि जितनी आपको हमने सब्सिडी देनी है वापस ले रहे हैं, बट डॉक्यूमेंटेड दिखा रहे हैं कि ये हमने इतनी यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट किया। दैट इज ऑल यू नीड। जब ह्यूमन रिसोर्स आएगा वो खुद ही, अगर अच्छा टॉप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आएगा, वो खुद ही टेक डेवलप कर लेगा उसके अंदर। वो बहुत अच्छे। अब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, व्हेनेवर आई टॉक टू देम, दे आर सो वे अहेड ऑफ मी। देयर इज नो, आई कांट कम्पीट विद देम। ओके, उसी तरह उनको अगर आप एम्पावर करेंगे, एनेबल करेंगे, वो कर लेंगे। बाकी पॉलिसीज जो नॉर्मल बिजनेस की हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाएं, खुद ही ठीक हो जाएगा। ओके, ग्रेट। Controversial here, but this is how it is. बख्तियार साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।